welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके. Let's start our topic. Basically आज हम vowels और consonants के बारे में पढ़ेंगे. What is the difference between vowels and consonants? आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इसको एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई चीज़ भी मिस ना हो. फर्स्ट पॉइंट इज वॉवल. वॉवल जो है वो एज ए नाउन यूज किया जाता है. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. वॉवल्स आर लेटर दैट रिप्रेजेंट स्पीच साउंड्स वेयर एयर लीव्स द माउथ विदाउट एनी ब्लॉकेज बाय द टंग, लिप्स और थ्रोट. देयर आर 5 vowels and 1 special word. Our second point is consonants. A consonant is a speech sound that is not a vowel. There are 21 consonants in English alphabet. Let's look alphabet. आपकी स्क्रीन पर आपको अल्फाबेट शो हो रहे हैं जिसमें मैंने कुछ को ब्लैक, कुछ को रेड और एक वर्ड को ग्रीन किया हुआ है. Black alphabets are vowel. Let's read. A, E, I, O, U. These are called vowels. One is special vowel. Y. Because sometimes Y is used as vowel. Rest of the alphabet B, C, D, F, G, H, etc. These all are consonants. Repeat with me. A, E, I, O, U, and sometimes Y. The latter except vowels are called consonants. इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे मजीद और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट इज कैट. A. Second one is egg. E. Third one is hit. I. Fourth one is top. O. And last one is cut. U. दूसरी देखें. Y I की आवाज प्रोड्यूस हो रही है, सो इट्स वॉवल. ये कौन से वर्ड है? स्पेशल. बाईसाइकिल. Y जो इसमें क्या है? स्पेशल है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आई की आवाज, सो इट्स वॉवल. ट्रीटी. ई की, सो इट्स वॉवल. लास्ट 2 देखें. यू एंड यस. इनके स्टार्ट में Y है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड. So, okay, repeat again after me. A, E, I, O, U. Thank you so much for watching my video. If you like my video, please share, like and comment, and don't forget to press the bell icon.